So share my screen here. Okay, by share screen. What can they do? Or hopefully everything is set up. The pipeline function. The pipeline function is the most high-level API of the Transformers library. It regroups together. ऐसा लग रहा है कि अचानक से कहीं से स्टार्ट हो गया पाइपलाइन ऐसा. Welcome everyone. This presentation, automatically generated from the course material of Chapter 2, will walk you through the key topics. Natural language processing, or NLP, is a field at the intersection of linguistics and machine learning. It's not just about understanding individual words, but grasping the context in which they're used. NLP encompasses a wide range of tasks, from analyzing sentiment in reviews to generating text and even recognizing speech. Let's dive deeper into what makes NLP so powerful and challenging. In recent years, the rise of large language models, or LLMs, has transformed the NLP landscape. Models like GPT and Llama, trained on vast amounts of text data, can understand and generate human-like text. This shift has moved us away from building specialized models for specific tasks to using a single versatile model that can handle a wide range of language tasks. Let's explore what makes LLMs so groundbreaking. Despite the advancements in NLP and LLMs, language processing remains a challenging task. Computers don't process information the way humans do, and language is inherently complex. Ambiguity, cultural context, sarcasm, and humor are just a few of the hurdles that make this field so intricate. We'll discuss how these challenges are being addressed and why they still persist. NLP involves a variety of tasks that help machines understand and generate language. From classifying entire sentences to identifying the grammatical structure of words, these tasks are the building blocks of NLP. Text generation, translation, and question answering are just a few examples of how NLP is applied in real-world scenarios. Let's take a closer look at these tasks and their applications. Large language models are characterized by their immense scale, with millions to hundreds of billions of parameters. This scale enables them to perform a wide range of tasks without needing task-specific training. They can learn from examples provided in the prompt and even demonstrate emergent abilities that weren't explicitly programmed. Let's explore what makes these models so versatile and powerful. While LLMs are incredibly powerful, they're not without limitations. They can hallucinate, generating incorrect information with confidence, and lack true understanding of the world, relying instead on statistical patterns. Biases in training data can also be reproduced, and their context windows, though improving, remain limited. Additionally, these models require significant computational resources. Let's discuss these challenges and their implications. The advent of LLMs has shifted the paradigm in NLP, moving from specialized models to a single, large model that can handle a wide range of tasks. This shift has made sophisticated language processing more accessible, but has also introduced new challenges in areas like efficiency, ethics, and deployment. Let's explore how this change is reshaping the field and what it means for the future of NLP. ये जब ये चालू ही हुआ था LLM का क्रेज और वो सब हाइप, तब एक गूगल का इंजीनियर था जिसने इसको शायद बाद में फायर किया गया या जो भी किया गया, बट ही वाज लाइक ये सेंटिनेंट पीस है, उससे बातें करने लग गया था, ये करने रहा था, राइट. तो वो ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो कितना भी अच्छा हो और कितना भी अच्छा आर्किटेक्चर से बना क्लीन प्रोडक्ट हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो मीनिंग नहीं समझ रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, प्रोबेबिलिस्टिक की है, तो ही फेल्ट कि नहीं ह्यूमन लाइक नहीं, लेकिन कुछ अलग लेवल की उनकी अंडरस्टैंडिंग है टाइप्स, और इट्स यू नो ह्यूमन वे में कॉन्शियस नहीं, बट उसके फॉर्म में जिस जैसे भी वो सोच रहा था. यू रिमेंबर दैट? उसका नाम मुझे याद नहीं, बट उसके काफ़ी ये हुआ था. एंड इट इज़ एक्चुअली फैसिनेटिंग कि जो बंदा ट्रेन कर रहा है डेटा वेटा ऐसा एब्स्ट्रैक्ट ऐसे इस पे उसके साथ डील कर रहा है, लेकिन उसको भी ये लग रहा है कि नहीं, मतलब एक थर्ड पर्सन जिसको कुछ आइडिया नहीं है उसके सामने एक फिनिश प्रोडक्ट रखा, उसको लगता तो भी कोई बात थी, बट ये बंदा जो मैट्रिक्स और ये और कर्व और लॉस फंक्शन और ये सब देखा हुआ है, और उसके बाद उसके आउटपुट देखने के बाद वो भी वो अगर ये बोल रहा है
तो एक अलग लेवल का है. खैर, in this section we'll look at the transformer models can do from to transfer library the pipeline function. Okay, I think transformer library बहुत लोग use करते हैं to deal with LLMs, data sets and everything, and that's coming from Hugging Face, I think. Frankenstein से inspiration. क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा था? सॉरी. येलो या कोई कुछ बोल नहीं रहा था. मैं बोला फ्रैंकनस्टाइन से इंस्पायर होगा. फ्रैंकेनस्टाइन से इंस्पायर है. हाँ. फ्रैंकेनस्टाइन ने क्या बनाया था? उसने तो जीता जागता आदमी बनाया था ना. लाइक इट वाज अ बायोलॉजिकल क्रीचर ना, जो भी मॉन्स्टर था. नहीं, but on a dead body basically. तुम लोगों के पास लैपटॉप तैयारी के साथ आए हो कि नहीं? अर्जुन की आवाज सुन के तो नहीं लग रहा, वो तो दबे दबे आवाज में कैसे बातें कर रहा है. मेरी भी यही मान लो सिचुएशन आज की. अच्छा, कल पूरी तैयारी करता हूँ. ठीक है, चलो. The pipeline function. The pipeline function is the most high-level API of the Transformers library. It regroups together all the steps to go from raw text to usable predictions. The model used is at the core of the pipeline, but the pipeline also includes all the necessary preprocessing, since the model does not expect text but number, as well as some post-processing to make the output of the model human-readable. Let's look at the first example with the sentiment analysis pipeline. This pipeline performs text classification on a given input and determines if it's positive or negative. Here, it attributed the positive label on the given text with a confidence of 95%. You can pass multiple texts to the same pipeline, which will be processed and passed through the model together as a batch. The output is a list of individual results in the same order as the input text. Here, we find the same label on score for the first text, and the second text is judged negative with a confidence of 99.9%. The zero-shot classification pipeline is a more general text classification pipeline. It allows you to provide the labels you want. Here, we want to classify our input text along the labels education, politics, and business. The pipeline successfully recognizes it's more about education than the other labels, with a confidence of 84%. Moving on to other tasks, the text generation pipeline will autocomplete a given prompt. The output is generated with a bit of randomness, so it changes each time you call the generator object on a given prompt. Up until now, we've used the pipeline API with the default model associated to each task, but you can use it with any model that has been pre-trained or fine-tuned on this task. Going on the Model Hub, huggingface.co/models, you can filter the available models by task. The default model used in our previous example was GPT-2, but there are many more models available, and not just in English. Let's go back to the text generation pipeline and load it with another model, Distill GPT-2. This is a lighter version of GPT-2 created by the Hugging Face team. When applying the pipeline to a given prompt, we can specify several arguments, such as the maximum length of the generated text or the number of sentences we want to return, since there is some randomness in the generation. Generating text by guessing the next word in a sentence, randomness is the generation. Generating text by guessing the next word in a sentence was a pre-training objective of GPT-2. The fill mask pipeline is a pre-training objective of BERT, which is to guess the value of masked words. In this case, we ask the two most likely values for the missing words according to the model, and get mathematical or computational as possible answers. Another task Transformers model can perform is to classify each word in a sentence instead of the sentence as a whole. One example of this is named entity recognition, which is a task of identifying entities such as persons, organizations, or locations in a sentence. Here, the model correctly finds the person, Sylvain, the organization, Hugging Face, as well as the location, Brooklyn, inside the input text. The grouped entities equal true argument used is to make the pipeline group together the different words linked to the same entity, such as Hugging and Face here. Another task available with the pipeline API is extractive question answering. Providing a context and a question, the model will identify the span of text in the context containing the answer to the question. Getting short summaries of very long articles is also something the Transformers library can help with.
with the summarization pipeline. Finally, the last task supported by the pipeline API is translation. Here, we use the French-English model found on the Model Hub to get the English version of our input text. Here is a brief summary of all the tasks we've looked into in this video. Try them out through the Inference widgets in the Model Hub. कहाँ करें अपन? मेरे हिसाब से हगिंग फेस पे ही करते हैं, क्योंकि वरना वो पाइपलाइन मॉडल डाउनलोड करेगा सारे मॉडल मेरे इसमें डालने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है शायद. Let's see, huggingface.co. Natural language processing test classifications. ये सब तो थे. स्पेसेस में करना है क्या? ये यहाँ पे वो है ही नहीं करने वाला सीन. ये सिर्फ रिपोजिटरी है और ये करने नहीं देता या पेड प्लान पे देता है करने वगैरह. डू यू नो मॉडल्स डेटा सेट? ऐसा तो दिख रहा है जैसे एक पे मैं चला जाता हूँ. लेट्स सी. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसको पूछते हैं जेमिनी को. So when you host Jupyter Notebook on a Hugging Face hub, Hugging Face repository में कैसे अपलोड करना है भाई? Mine is not a data set. I just want to create, let's say, a notebook. तो अपडेट कैसे करना है? The actual repository. कौन सा करना है इसमें से? If you want to build an interactive demo around your notebook's content, maybe space करके देख लेते. और इसमें प्लस स्पेस है क्या? न्यू स्पेस. ओके. इसमें license will be and you can just space. I don't know. Create space. Choose your temple and chatbot text to image space hardware. This is free. GPU 0 GPU. यहाँ पे सब CPU वाले ही है. ये जुपिटर लैब चाहिए मुझे, जैसे मान ले
और and this is free. Persistent across restart नहीं चाहिए भाई. Ephemeral free. Space secret Jupyter token ये क्या है? Defaults to Hugging Face. Let's keep this public and don't care. We need it. This template requires space to be private. एक्चुअल जो डेमो वगैरह जो अपन बात कर रहे थे उसमें वो ग्रेडियो का ऑप्शन था ना, उसमें वेब ऐप बनते हैं, वो 5 मिनट में वो वेब ऐप बना लेता है. While this is going on, let's also keep moving. I think फिर बस ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी अपने को इंस्टॉल करनी है and then you have to specify what task you are interested in, and these are the list of tasks, right? So text में ही अपने आप को सीमित रखे तो this text generation task, text classification, summarization, feature extraction, blah blah blah. जैसे इसने क्या किया था, sentiment analysis, right? तो सेंटिमेंट एनालिसिस एक टास्क है, हालांकि इसने यहाँ पे तो नहीं दिया. ज़ीरो शॉट क्लासिफिकेशन. ज़ीरो शॉट इज़ वेर यू डोंट गिव एग्जांपल्स ना. व्हाट इट डजंट टेल यू हियर कि उसने कौन सा मॉडल यूज़ किया है. इट डिफ़ॉल्ट्स टू. तो अब ये लाइब्रेरी यूज़ करने का वो तो एक है कि या तो आप ये देखें डॉक्यूमेंटेशन. Hugging Face Transformers library and transformer documentation, let's say. इसका डॉक्यूमेंटेशन का कुछ दिख रहा है क्या? Refer pipeline API for complete risk available types. Yeah, yeah, line. Okay, so we'll keep this open. So pipelines are a great and easy way to use models for inference, right? These pipelines are object that abstracts most of the complex code from the library, offering a simple API dedicated to several tasks. See task, for example, there are two categories of pipeline abstraction. The pipeline, which is the most powerful object. The task-specific pipelines are available for audio, NLP, and whatever. The pipeline abstraction is a wrapper around all the other available pipelines. उसके पहले एक बार लोकली भी करना हो तो इंस्टॉलेशन देख लेते हैं. दिस इज पिप इंस्टॉल ट्रांसफॉर्मर्स. इसमें कोंडा वाला नहीं है क्या? कोंडा वाला मेक श्योर कि
मेरे इसमें वो है दिस इज मशीन लर्निंग बेसिक्स. Offline. The default is this. ठीक है, बाद में करता हूँ ये चेंज डायरेक्टरी का लोकेशन. लेट्स डू अ क्विक स्टार्ट. To start, we recommend creating an account. Account lets you host and access version control models, data set spaces, and create an access token. Right, तो वो एक हमने चालू किया था. ये हटा. ये उसका डन है. और डिफ़ॉल्ट टोकन इज, ये पता नहीं, एक मेरा स्पेस बना. राइट, इफ यू डोंट हैव द कंडीशन करना क्या है लेकिन इसके बाद this quick start introduces Transformers key features, showing you how to load a pre-trained model, run inference with pipeline, and fine-tune a model with a trainer. Okay, so from ये क्या था? ठीक है, फुली वो लाइब्रेरी इंस्टॉल होने के बाद ये आ जाएगा. बट दिस इज बेसिकली कनेक्टिंग यू टू Hugging Face account. Install a machine learning framework. Torch तो मैंने बनाया हुआ है. Transformers, Data City, Value, Accelerate Team. ये सब भी बनाने के लिए बोल रहा है. तो उसका अपन ये सब होने के बाद pre-trained model. Each pre-trained model inherits from 3 base classes: pre-trained config, pre-trained model, and preprocessor. A model defined by the model attribute from configuration file. A pre-trained model only returns the raw hidden states for a specific task. Use the appropriate model head to convert raw hidden states into a meaningful result. For example, llama model versus llama for casual. Causal. We recommend using auto class API to load models and preprocessor because it automatically infers the appropriate architecture for each task.
use pre-train to load weights and configuration from the hub into the model and preprocessor. Right, so I think what is he saying? So auto class API है उसका, which is auto model. In many cases, architecture you want to use can be guessed from the name or the path of the pre-trained model you are supplying from pre-trained method. Auto classes are here to do this job for you, so that you automatically retrieve the relevant model given the name or the path to the pre-trained weights and config vocabulary, right? So ये करेंगे तो इस weight के associated weights and config and vocabulary सब वो इसमें डाल देगा. Instantiating one of auto config, auto model and auto tokenizer will directly create a class of this. Extending on each of these auto classes is a method to be extended. ठीक है, so अपन वो करेंगे. बट यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन है. यहाँ पे उसने ऑटो मॉडल यूज़ किया और यहाँ पे वो कुछ और यूज़ कर रहा है. ऑटो मॉडल फॉर कॉजल एलएम कर रहा है. So उसमें भी कुछ use from which is fine. Okay, so मॉडल लेके आए, टोकनाइज़र लेके आए, राइट. अब ये एक अलग बात है कि इसके लिए कौन सा टोकनाइज़र चाहिए वो कैसे पता चलेगा. टोकन is now ready for inference. Pipeline class is the most convenient way to inference with this. Technically, you can use any tokenizer for any model, right? You will just use the same to do the unembedding, so to speak. नहीं होना चाहिए ना वैसे, क्योंकि इस मॉडल की ट्रेनिंग अगर एक लेवल पे एम्बेडिंग पे हुई है तो कायदे से तो मुझे वही टोकनाइज़र यूज़ करना पड़ेगा. है ना. तो इसमें भी तो प्री ट्रेन में टोकनाइज़र में भी उसने वही डाला है. बट आई एम श्योर कि वो ये क्विक स्टार्ट है तो इसमें उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है. दिस इज़ मेड जस्ट टू मेक श्योर कि यू हैव योर एनवायरनमेंट सेटअप प्रॉपर्ली एंड देन विल गो बैक. तो जस्ट मेक श्योर कि दैट इज़ द केस. तो पाइथन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स, जैसे मान लो ये चाहिए था मुझे. ये इंपुट हुआ अच्छे से. दूसरा क्या था इसका, मैंने पूछा था इसको ट्रांसफॉर्मर्स तो है, डेटा सेट्स इवैल्यूएटर ये सब टीम. ठीक है, ये तो हुआ अच्छे से. होंडा फोर्स ट्रांसफॉर्मर तो हो गया है. Don't do transformers, I'll just do data sets. In fact, and all this string data sets. Yes.
वापस वी विल गो बैक एंड होपफुली वो सेटअप हो जाएगा और वी कैन मूव टू ये दूसरी एक चीज़ मुझे वो नहीं समझ में आई कि ये तो मेरे लोकल के लिए तो मैं सेटअप कर लूँगा। दूसरा मैंने यहाँ पे जो एक स्पेस पे अपना एक स्पेस सेटअप किया है दैट इज़ प्रोबेबली जस्ट लाइक गिटहब आई थिंक टू पुश आवर कोड टू देयर बट उसका आगे करना क्या है वो एक समझ नहीं आ रहा। डिफ़ॉल्ट टोकन इज हगिंग फेस इस टोकन के साथ एप्स ये पूछते हैं इसको फर्स्ट हगिंग फेस is created push my local notebook there and run this face ठीक है। एक पहले तो वो ये कह रहा है राइट कि इसका ये करें। लेट मी जस्ट डू दिस वेयर एम आई ml practice hugging face LLM copy your notebook into the primary directory. Okay, so let's do this. Enter your credentials. अब मेरे को Hugging Face के credentials थोड़ी याद है भाई। 2 मिनट में ये करता हूँ स्ट्रीमिंग प्रो